Chapter 2, Business Policy and Strategic Management. Section 1, Framework of Strategic Management. Concept covered. Framework of Strategic Management. फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क आपने पहले भी देखा होगा। जब दादी के फोटो आपने देखे होंगे, जब उसमें फ्रेम होता है तो ज्यादा देर तक चलता है। फ्रेमवर्क रेफर करता है, फ्रेमवर्क रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान और अ सपोर्ट। फ्रेमवर्क रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड प्लान और सपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। जब हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि मैं यहां जाना चाहता हूं, उसके रेस्पेक्ट में मैं यहां हूं, कौन कौन से तरीके से मैं पहुंचना चाहता हूं, उसमें से बेस्ट तरीका कब है और कब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जब रिटन प्लान मारो पास हुए है तो मन ने बोले है मेरा फ्रेमवर्क तैयार है। मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ योर लाइफ। वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर डू यू वांट टू बी, विच आर द डिफरेंट वे, विच वे इज द बेस्ट, हाउ कैन यू एंश्योर अराइवल देयर। जब आप ये बातें कहते हो ना तो आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आपको आपके जिंदगी का फ्रेमवर्क है। सो फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर्ड प्लान और सपोर्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान। स्ट्रक्चर्ड प्लान, स्ट्रक्चर्ड प्लान। फ्रेमवर्क रेफर करता है स्ट्रक्चर और फ्रेम सपोर्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट जनरेटेड। फ्रेमवर्क रेफर करता है नीटिंग टुगेदर ऑल फ्रेम कलेक्टिवली स्टेप बाय स्टेप। नीटिंग क्या होता है याद है? दादी स्वेटर बिन रही है, देख रहे हैं स्वेटर बनते हुए दिख रहे हैं दादी स्वेटर बिन रही है ना। उसी तरह से डिफरेंट आइडियाज को हम नीट करते हैं, साथ में लेते हैं और फिर एक दिन बड़ा स्वेटर बन जाता है। अब तो ये जमाना थोड़ा सा बदल गया। पहले क्या होता था, जैसे ही पता लगता था कि भाभी प्रेग्नेंट है तो मदर का एक ही काम हो जाता था कि वो स्वेटर बुनना शुरू होता। जैसे वो बच्चा ठंड में ही पैदा होगा, अरे यार जुलाई में पैदा होता था तो भी उसके लिए स्वेटर होता था, अब देखिएगा न्यू बॉर्न बेबी को आज भी जो लोग आते हैं देखने के लिए, वो कुछ ना कुछ जो कपड़े लाते हैं वो गड़म लेके आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट प्रोबेबली इट्स बिकॉज कि अंदर में गर्मी से आता रहता है तो उसको लगता है मतलब नहीं ठंडी से आता रहता है तो लगता है अंदर भी यहाँ भी वैसा ही कुछ। आई डोंट वांट टू नो स्पीक अबाउट दिस एनीथिंग। सो फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड प्लान और सपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। ये रेफर करता है पूरे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कैसे इसको प्लान करना है, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और ये रेफर करता है नीटिंग टुगेदर ऑल फ्रेम, जितने फ्रेम्स हैं उसको साथ साथ जोड़ना है स्टेप बाय स्टेप। दिस इज कॉल्ड द फ्रेमवर्किंग ऑफ एंटायर प्रोसेस गोल व्हाट वी हैव। The basic framework of a strategic process can be described in a sequence of the 5 stages as shown. तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है इसको हम 5 सीक्वेंसेस में हम डिसाइड करते हैं। तो फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब भी आता है तो आपको इस 5 स्टेज को लेके जाना पड़ेगा, और जब तक आप इस स्टेज को नहीं लेके जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। अब देखिएगा 5 स्टेज ऑफ दिस को अच्छी तरह से समझिए आप, और स्क्रीन पे आपके सामने 5 स्टेज है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो खुद से पूछिए कि आप कौन हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए अपने कंपनी का अपने आप से। और पहला स्टेज है हमारे पास है स्टेज 1। आप नंबर में मत लिखिएगा, वर्ड में लिखिएगा, इसको बात समझिएगा। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहां हैं, और फिर ब्रैकेट में लिखा है बिगिनिंग। तो स्टेज 1 है कि मैं कहां हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे पास थ्रेट क्या है। इन तमाम चीजों को स्टेज 1 में एनालिसिस करते हैं। मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, ये स्टेज 1 पे हमें पता लगाना है। नेक्स्ट स्टेज 2 करता है वेयर डू वी वांट टू बी, ब्रैकेट में है एंड। हम जाना कहां चाहते हैं, इसमें डिटेल विजन की बातें करेगा। वेयर डू आई वांट टू बी, मैं कहां जाना चाहता हूं, वेयर डू वी वांट टू बी। स्टेज 1 वेयर आर वी नाउ, बिगिनिंग। 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 स्टेज 2 वेयर डू वी वांट टू बी, एंड। Where do we want to be, and where do we want to be, and where do we want to be, and
अब थोड़ा सा इसमें हम आगे मूव कर रहे हैं. ये है स्टेज 3. हाउ माइट वी रीच देयर? दिस इज मीन्स. हाउ माइट वी रीच देयर? How might we reach there? How might we reach there? How might we reach there? Stage 3. This is called means. Stage 4. Which way is the best? Which way is the best? Stage 4. Which way is the best? Stage 4. Which way is the best? Stage 4. Which way is the best? Evaluation. 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 And last में coming stage 5. How can we ensure arrival? Control. How can we ensure arrival? Control. तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स हैं? 5. फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स हैं? 5. आराम से मेरे साथ बोलिए. स्टेज 1. Where are we now? Beginning. Stage 1. Where are we now? Beginning. Stage 2. Where do we want to be? Ends. Where do we want to be? End. Stage 3. How might we get there? Means. Stage 3. How might we get there? Means. Stage 4. Which way is the best? Evaluation. Which way is the best? Evaluation. Stage 5. How can we ensure arrival? ये 5 स्टेज हैं in the framework of strategic management. अगर आपसे पूछा जाए कि what are the steps in the framework of strategic management, आप आराम से बोलते हैं there are 5 stages in the framework of strategic management. Stage 1, where are we now? Beginning. This is the starting point of strategic planning. At this stage, we must do something to understand where are we now. Beginning. अपन लोगों को समझने का है सिचुएशन क्या चल रहा है. सो वी शुड डू सिचुएशन एनालिसिस. अपन लोगों को समझने का है मार्केट पोजीशनिंग क्या है. अपन लोगों को समझने का है कॉर्पोरेट इमेज हमारी क्या है, हमारी स्वॉट एनालिसिस क्या है. तो जब स्टेज 1 में आपको लिखने के लिए आए तो आप सिचुएशन एनालिसिस लिखेंगे, मार्केट पोजीशन एनालिसिस लिखेंगे, कॉर्पोरेट इमेज एनालिसिस लिखेंगे एंड स्वॉट एनालिसिस लिखेंगे. इनको आपको लिखना बहुत 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 जरूरी है. इस बात को समझिएगा. मैं सारे स्टेज बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं डिक्टेट कर दूंगा. स्टेज 2, वेयर वी वांट टू बी एंड्स. एट दिस स्टेज वी मस्ट डू द फॉलोइंग. फाइंड आउट द विजन, मिशन, what, how and for whom we are doing, set objective and goal setting to achieve that. ये था स्टेज 2 पे. ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोलते हुए जा रहा हूं. मेन नाम याद होना चाहिए आपको. जब नाम याद होगा तो आराम से आप लिख पाएंगे. अगर 5 नाम याद है तो आराम से कर सकते हैं. अब आता है हमारे पास स्टेज 3. हाउ माइट वी गेट देयर मीन्स. हाउ माइट वी गेट देयर मीन्स here the organization deals with the various strategic alternative the company has. कंपनी के पास जितने अवेलेबल हैं उसको देखता है. Stage 4, which way is the best? Evaluation. कौन सा बेस्ट है? Out of all the alternative generated in the earlier stage, the organization select the best suitable alternative in line with the SWOT analysis the company has. ये कंपनी को देखना पड़ेगा. Out of all the alternative generated in the earlier stage, the organization select the best suitable alternative in the line with the SWOT analysis. Stage 5, how can we ensure arrival, that is control. This is implementation and control stage of the suitable strategy. तो आपने देखा ये पूरे के पूरे 5 आपके पास स्टेजेस हैं इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब मैं आपको डिक्टेट करूंगा. ग्राफ तो आप देख ही चुके हैं, वही ग्राफ है, वही लेके चलना है. कंटेंट क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं ताकि आप एग्जाम के लिए समझ जाएं. जब एग्जाम में आपके पास आएगा तो सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा. ये डायग्राम आपके पास है, देख लीजिए. ये बनते हुए आपने देखा होगा, फिर से आपके पास फिक्स्ड होके आ गया. देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए. स्टेज 1 कैसे निकल के आ रहा है, उसके पहले इंट्रोडक्शन की घड़ी आ रही है. वेयर आर वी नाउ दिख रहा है, बिगिनिंग. स्टेज 2 आप देख रहे हैं, where do we want to be, ends. Stage 3 आपको दिख रहा है, how might we get there.
दैट इज मीन्स स्टेज 4 दिख रहा है विच वे इज द बेस्ट इवैल्यूएशन. स्टेज 5 आपको दिख रहा है हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल कंट्रोल. अब इसको एक एक करके दो दो लाइन लिख लीजिए एंड अब आप डिक्टेशन ले लीजिए. अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए. डिक्टेशन स्टार्ट नाउ. लिखिएगा. देयर आर फॉलोइंग 5 stages in the framework of strategic management. Stage 1. Where are we now? Beginning. This is the starting point of strategic planning. At this stage, we must do following. 1. Situation analysis. 2. Market position analysis. 3. Corporate image analysis. 4. SWOT analysis. आराम से लिखें. Stage 2. Where are we want to be? End. Where are we want to be? End. At this stage, we must do following. At this stage, we must do the following. 1. Vision. 2. Mission. 3. Setting objective. 4. Goal setting. Vision, mission, objective, goal setting. आराम से लिखिए. Stage 3. How might we get there? Bracket में means. Here, the organization deals with the various strategic alternative it has. Stage 4. Which way is best? Evaluation. Which way is the best? Evaluation. Out of all the alternative generated, in the earlier stage, the organization select the best suitable alternative in line with SWOT analysis. Out of all the alternative generated in the earlier stage, the organization select the best suitable alternative in line with its SWOT analysis. Stage 5. How can we ensure arrival? Bracket में control. How can we ensure arrival? Bracket में control. This is implementation and control stage. This is the implementation and control stage of a suitable strategy. आपने यहां देखा फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड आपने देखा इसमें 5 स्टेजेस हैं. स्टेज 1 वेयर आर वी नाउ. स्टेज 2 वेयर वी वांट टू बी. स्टेज 3 हाउ कैन वी गेट देयर. स्टेज 4 which way is the best.
Stage 5, how can I ensure an arrival? अगर आपको फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझ में आया और लिखने के लिए कंटेंट मिला तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए एनी टाइम क्लास के बारे में. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.